Next special reaction, Wittig reaction. If you have an aldehyde or a ketone, this reagent is called as Wittig reagent. The end product is an alkene. We won't be seeing any mechanism. हमको just product और reagent identify करना आना चाहिए in the question paper, and you need to know what will be the product. Okay, you will get E and Z both, or cis and trans. Out of which trans will be major or E will be major and Z is minor. And the byproduct is PH3P double bond, where the P is the phosphorus. Okay, just you need to remember the reagent and you need to remember the product. Mechanism नहीं है हमारे पास, so don't worry. Example, double bond CH2 plus okay. Next reaction, Wittig reaction taken. Next reaction is very important for JEE Advanced. The reaction is called Perkins condensation, and it is only for aldehydes. Perkins condensation. Aldol condensation, Claisen ester condensation, Cannizzaro reaction, and Perkins condensation. These reactions are very important. Perkins condensation. JEE mains में भी आ सकता है, but chances are more for JEE Advanced. And it is only for aldehydes. Perkins condensation is the condensation of an acid anhydride, containing an active
methylene group containing an active methylene group. Methylene मतलब CH2. Okay. Active methylene group मतलब the CH2 group which is attached to electron withdrawing groups. Okay. Active methylene group मतलब CH2 attached to electron withdrawing groups. If it is attached to electron withdrawing group, so जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो रहेगा, it will be acidic. It can be removed as H positive. H positive जैसा रिमूव करने के बाद कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, it can be stabilized by the electron withdrawing groups. Hence, it is called as active methylene group. Okay. So Perkin condensation is the condensation of an acid anhydride containing an active methylene group and an aromatic aldehyde to produce alpha beta unsaturated alpha beta unsaturated carboxylic acid. General reaction. Aromatic aldehyde C double bond O H plus acid anhydride CH2 C double bond O O C double bond O CH3. ओके इसमें से क्या करेंगे अगेन रिमूव H2O इधर फिर से मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आप लोग को नो नीड टू रिमेंबर द मैकेनिज्म नो हाउ टू राइट द प्रोडक्ट इससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा remove this particular part as H2O and remove this part okay so carboxylic acid मिलेगा ना so attach an OH alpha beta unsaturated carboxylic acid so this will give us the product AR CH double bond CH bond C double bond O OH this is alpha this is beta alpha beta unsaturated carboxylic acid plus the remaining part will be converting into CH3 C double bond O OH इस केस में एसिटिक एसिड ओके ओके general reaction specific reaction if you are having benzaldehyde plus acetic anhydride in the presence of acetate salt ये जो acetate salt है this is acting as catalyst ये जो O minus है it will be removing the H positive from this and it will be going and attacking कुछ further reaction होगा we are not going into the details of mechanism it is not required so you will get product CH double bond CH C double bond O OH can anyone tell me the name of this compound अगर इस COH के प्लेस में CHO रहता तो what will be the name of that compound
It is called as cinnamaldehyde. याद है? Cinnamaldehyde में if I am adding a LiLH4, the double bond as well as the CHO, both will be reduced. Double bond will be converting into alkane and the CHO will be converting into alcohol. Okay, वो cinnamaldehyde है, वो CHO के place में यहाँ पे क्या है? You have COOH, hence this is called as cinnamic acid. Okay, is this clear? Perkins reaction अलग से याद रखना. Remember the reagent used for it, because in the question paper suddenly if you see these reagents, हमको समझ में नहीं आएगा क्या करना है. Okay, that is a Perkins reaction. क्योंकि इसके लिए हम मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं ना, बाकी सब चीजों के लिए हमने मैकेनिज्म देखा स्पेशल रिएक्शंस के लिए. इन स्पेशल रिएक्शंस के लिए वी आर नॉट सीइंग द मैकेनिज्म. सो आपको क्वेश्चन पेपर में देखते ही थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ये जो रिएजेंट है इसको क्या करेगा. Okay, so separately remember this reagent. Okay, last reaction, Beckmann rearrangement. Schmidt reaction जो है we will be studying that in carboxylic acid derivatives chapter. Okay, उसमें भी आएगा, so वहाँ पे पढ़ेंगे. इस केस में I am just mentioning Beckmann rearrangement. Again important for JEE Advanced. This is exclusively for JEE Advanced, no need for JEE Mains and NEET. JEE Advanced के लिए. This reaction is done for oximes. Oximes पढ़ा हमने, याद है? For oximes, in the presence of acid catalyst such as H2SO4, H3PO4, or you can use Lewis acids, BF3, SO3. SO3 can also act as Lewis acid because sulfur is attached to 3 electronegative elements, so it is electrophilic. It can accept a lone pair. Okay, SO3, etc. This reaction is done for oximes in the presence of acid catalyst. Rearrange the oximes, rearrange to produce substituted amides. Substituted amides. We have seen what is meant by an oxime. We have seen what is meant by aldoxime, what is meant by ketoxime. If the oxime is formed from aldehyde, it is called as aldoxime. If it is formed from ketone, it is called as ketoxime. And what is the reagent which we use for the production of oximes? Anyone? रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स में हमने बहुत सारे वेरिएशंस देखा. ओके, उसमें लास्ट में हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जो रिएक्शन है which is NH2OH, this will lead to the formation of a product called oxime.
Everyone in the lecture? Yes. Okay. You can have isomers of it, syn and anti. मैं अभी वो मार्क नहीं कर रहा हूँ, but you can have syn and anti isomers. This on in the presence of an acid catalyst like H2SO4, H3PO4, or Lewis acid catalyst like BF3SO3, it will rearrange to form substituted amides. Amide is RC double bond NH2. Substituted amide is one of the hydrogen is substituted by alkyl group. Okay, इस particular case में I am taking the R dash to this side. कुछ rearrangement okay. Mechanism में देखेंगे out of R and R dash, which will be rearranging to form the substituted amide. R shift होगा या R dash shift होगा, और what are the conditions for that shift? Okay, this is the general reaction. We are getting a substituted amide. ये दोनों R या R dash में से किसी ना किसी को we will be attaching that to the nitrogen. Okay, let us see the mechanism. R bond C, double bond O, R dash plus NH2 OH in the presence of an acid catalyst. Nucleophilic addition reaction कुछ होके you will be forming double bond N bond OH. I am taking this particular isomer. इसका anti, syn और anti दोनों isomers मिल सकता है, but I am taking this particular isomer for the mechanism. Okay. Next step में क्या है? I am adding a H positive. The lone pair on the oxygen will get protonated with this particular H positive, leading to the formation of R C R dash double bond N bond OH. एक लोन पे इसके ऊपर. Okay, OH2 positive ना, ये protonate हुआ. What happens in the next step is ये जो H2O, is it a good leaving group? हाँ. H2O is a good leaving group, right? हाँ. So होगा क्या? This will be acting as leaving group. When this acts as leaving group, at the same time, whenever it is going out, at the same time, the R dash will be migrating to this particular nitrogen. Okay, अभी हो क्या रहा है? देखो, the one which is present anti to this H2O positive, that particular group will be migrating. ये जो R है ये migrate नहीं होगा because this is leaving from this side and this is attacking on the opposite side. So the one which is present anti to H2O positive, that will be migrating to the nitrogen. When this migrates, अभी इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड के नुकसान हो रहे हैं. Whenever this goes out, इसके नाइट्रोजन के लिए एक बॉन्ड का नुकसान हुआ. When R dash is attaching to this particular nitrogen, that got nullified. एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ. So होगा क्या? What will be the structure of the product? R C, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा. डबल बॉन्ड N बॉन्ड R dash, यही होगा. Okay, can we have resonance inside this? N के ऊपर लोन पेयर है ना. So lone pair alternate positive charge. वो जो पॉजिटिव एंड लोन पेयर है वो दोनों
पैरेलल ऑर्बिटल्स में है, so it will convert into RC triple bond N, उसके ऊपर positive R dash. Out of these two structures, which will be a major structure and which will be a minor structure? Second one major. Second one major because it is octet completed structure. First one will be minor because carbon का octet complete नहीं है. Okay. इसके बाद अलग से दिखा रहा हूँ. So you have R C triple bond N positive R dash, whose resonating structure is R C double bond a positive N R dash. Okay. Whenever H2O approaches this particular molecule, whenever H2O approaches this particular molecule, the pi bond will be polarized onto either of the atoms, right? The pi bond will be polarized onto either of the atoms. On which particular atom the pi bond will be polarized? Nitrogen. So ये इसके ऊपर आएगा, तब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा ना, so it will be attacking on that particular positive charge. Any doubt? Or else you can directly show the attack on this, but a minor structure है ना, I am showing the attack on the major structure. Whenever this approaches, the pi bond will be polarized onto either of the atoms. Nitrogen के ऊपर positive है और nitrogen being more electronegative, it will be polarized onto nitrogen. So carbon के ऊपर जाके attack करेगा lone पे. Any doubt? नहीं. Okay. So this will lead to the formation of R C double bond N R dash bond OH2 positive रहेगा. Yeah, in the same step I'm removing a H positive. Okay, so this will convert into OH. Can we have tautomerism? इनोल जैसा ही कुछ हुआ ना ये, और कार्बन के प्लेस में इधर नाइट्रोजन है. Okay, so this will tautomerize to give R C double bond O bond NH R dash. आ गया प्रोडक्ट. ओके, क्लियर? समझ में आया क्या किया हमने इधर? आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, the one which is present anti to the OH will be migrating to nitrogen and it will be forming the amide. Okay, so in the reaction, whenever the first reaction happens, you can have both the compounds. इसका sin मिला तो इसका anti भी मिल सकता है. So in the mixture also you can have two types of compounds, R dash C double bond O NH R, R C double bond O NH R dash, दोनों मिलेगा. Okay, दोनों मिलेगा. And this particular amide is nothing but a carboxylic acid derivative. Whenever you have a carboxylic acid derivative, upon hydrolysis of carboxylic acid derivatives, what do we get? Hello. Hello.
कहाँ तक सुना आप लोग? ये वाला पॉइंट लिखा था, यहाँ पे था क्या आप लोग? नहीं। Okay. So what is happening in Beckmann rearrangement? It is not the electron donating nature that determines which alkyl group will migrate, but it is the stereochemical arrangement that does. Okay, the alkyl group which is anti to OH will migrate. जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा that will migrate, ऐसा कुछ नहीं है. The one which is present anti to OH will be the group that will be migrating to nitrogen. Okay, उसके करस्पॉन्डिंगली हमको वो एमाइड मिलेगा. सो दो क्वेश्चंस दिया है इसमें, एक CH3 एंटी में है और दूसरा PH एंटी में है. If CH3 is anti, you will get this amide which on hydrolysis will lead to a different amine in carboxylic acid. हाइड्रोलिसिस करने से प्रोडक्ट क्या मिलेगा इधर? You will get PH C double bond O OH plus CH3 and H2. In this case, you will get CH3 COOH plus PHNH2 aniline. Is this clear? This is a carboxylic acid derivative. Amide is a carboxylic acid derivative. Any carboxylic acid derivatives upon hydrolysis will give back carboxylic acid. So इसको break करके इसको OH और hydrogen लगाओ. Okay? ठीक है. एक क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन. Identify A, B, C, D, E, F. ये जो F compound जो मिलता है, it is monomer unit of nylon 6.
What will be compound A? Bromocyclohexane. Bromocyclohexane. Good. Br2H nu. The characteristic reactions of alkanes is free radical halogenation reactions. So you will get bromocyclohexane. Okay. This on treatment with aqueous KOH. What are the characteristic reactions of alkyl halides? They are either substitution reaction or elimination reactions. In this case, it is aqueous KOH. इसलिए substitution reaction होगा. You will get cyclohexanol. This on treatment with PCC. PCC is an oxidizing agent. So PCC के साथ secondary alcohol किस में convert होगा? किस में convert होगा secondary alcohol? Converts into ketone. Double bond O, cyclohexanol. अभी NH2OH के साथ इसका reaction करवा रहा हूँ. NH2OH is ammonia derivative, which is hydroxylamine. So आपको H2O हटाना है. So you will get product double bond and OH. You get an oxime. This on H plus and delta. This on H plus and delta. What is the reaction called? Beckmann rearrangement. इस केस में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इधर ये माइग्रेट हो सकता है, ये माइग्रेट हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट. ओके, व्हेनेवर दिस इज माइग्रेटिंग, इनिशियल इट इज 6 मेंबर्ड. अभी माइग्रेट होते समय कितने मेंबर का बन रहा है? कितने मेंबर का बन रहा है? 7 मेंबर हो रहे हैं ना? ओके, क्लियर है? व्हेनेवर एक्चुअल मैकेनिज्म में क्या होता है, जिन कार्बन के ऊपर से माइग्रेट हो रहे हैं वहां पे पॉजिटिव आएगा. जिन कार्बन के ऊपर से, देखो अगेन ऑब्जर्व द मैकेनिज्म, जिस कार्बन के ऊपर से माइग्रेट हो रहे हैं वहां पे पॉजिटिव आ रहा है. सो इधर भी वैसा ही कुछ करते हैं. अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं लिखना है, सबसे पहले क्या होगा, दिस कन्वर्ट्स इनटू I need to make a 7-membered ring. One, two, three, four, five, six. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membered ही हुआ ना ये. So 7 membered मतलब ऐसा कुछ आएगा. जिस कार्बन से माइग्रेट हुआ है वहां के ऊपर पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड, उसके साथ डबल बॉन्ड भी रहेगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर H2 हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप में वो हीट डेल्टा, वो नहीं, डेल्टा नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर H2 अटैक होके this will be OH.
which tautomerizes यही कुछ बनेगा NH. Okay, this is a cyclic amide. Cyclic amides are called as lactams. ये जो है, this is a cyclic amide. Cyclic amides are not known as lactams. Cyclic esters को क्या बोलते हैं? They are called as lactones. नहीं, वो cyclic ether है. Cyclic ether is oxirane. Cyclic esters are called as lactones. Cyclic amides are called as lactams. Okay, and this particular compound जो भी बनाया हमने, this is called as caprolactam. Caprolactam. Okay, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो एक बार हाइड्रोलिसिस का भी प्रोडक्ट लिख लेते हैं. H3O positive. इसका हाइड्रोलिसिस किया तो this will break down into NH2. बचा हुआ सारा इसके साथ ही अटैच्ड है. 1 2 3 4 5 and 6th carbon is COOH. So CH2 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 और एक CH2 and 6th carbon is COOH. Is this clear? I hope this is clear. डायरेक्टली आप लोग देखो, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ये लिखने की कुछ जरूरत नहीं. यहाँ से आप लोग डायरेक्टली वो साइक्लिक एमाइड बना सकते थे. ओके, 7 मेंबर होना चाहिए and you need to have C double bond or NH. तो इधर से डायरेक्टली ये लिख सकते थे. आप लोग कंफ्यूज होंगे करके एक एक स्टेप लिखा मैंने. Is this clear? हाँ सर. Okay. End of aldehydes and ketones chapter. I'll give you some questions. Try to solve them. Convert CHO to OH, CH3, OH, CH3, CH3. इस कंपाउंड को आप लोगों को इसमें कन्वर्ट करना है.
I'll give you options. Options में आप लोग mark करो. Or else I will give you the reagents which you can use. Use the reagents in a proper sequence. Okay. Use CS3 MgBr, CS3OH in acidic medium, AgNH3 twice positive OH minus, which is Tollens reagent. You need to convert that into that using these three reagents. किस sequence में आप लोग डालोगे in order to get this particular conversion done? Question समझ में आप लोग को? You need to use these three reagents and you need to convert this given compound into this compound. पहले किस reagent को डालोगे, उसके बाद क्या क्या reactions करवाओगे, उसकी वजह से products क्या क्या मिलेगा. Everyone. Suppose if you are starting with CS3MgBr, starting में ही CS3MgBr को डाल दिया आप लोग, तब क्या होगा? What will be the product on addition of CS3MgBr on this compound? CS3 जाके अटैच होगा. CS3 जाके अटैच होगा. कहाँ पे अटैच होगा? Where you have aldehyde or the ketone. Why? इन दोनों के ऊपर. They are not mentioning the equivalent, so we will be considering that in excess. Okay. So ये इसके ऊपर if I am adding CS3MgBr, the characteristic reactions are nucleophilic addition reactions ना. So ये CS3 minus जो है, it will be attacking on this carbon as well as on this carbon, which will lead to the product. यहाँ पे ये OH CS3MgBr followed by H positive. Okay. यहाँ पे CS3, यहाँ पे C bond CH3 CHOH ये मिलेगा. So ये वाला प्रोडक्ट मिला क्या हमको? इस प्रोडक्ट मिलने के लिए क्या होना चाहिए? You need to have one more CH3 here. मिला क्या? नहीं. उसके बाद H plus CH3OH, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से कुछ रिएक्शन होता है क्या? नहीं ना, इसका कुछ नहीं होगा. Ammonical silver nitrate solution, Tollens reagent. Tollens reagent, will it have any effect on this? नहीं. No, right? Okay. So reaction कुछ जो desired product है वो नहीं मिला हमें.
Suppose if I am adding an alcohol, I'm adding an alcohol on aldehyde or ketone. What will be the products? What is the reaction of alcohol on an aldehyde or a ketone? याद करो, reactions याद करो. Aldehyde plus alcohol. हम एडिशन रिएक्शंस में स्टार्टिंग रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर पढ़ा. वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज एसिटाल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज कीटाल. एल्डिहाइड के केस में एसिटाल मिलता है, कीटोन के केस में कीटाल मिलता है. ओके और कीटोन plus alcohol will give you ketal. So if you are first directly adding CH3OH, अगर आप लोग CH3OH ऐड कर रहे हैं, then what will be the product? C double bond O CHO. I'm adding CH3OH. प्रोडक्ट ऐसा OCH3 होता है ना. यहाँ पे C bond OCH3 H OCH3. This is the product. So मिला क्या हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट? नहीं. ओके इसके बाद CH3MgBr ऐड किया. CH3MgBr के साथ कुछ रिएक्शन नहीं होगा ना. ये जी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ईथर्स के लिए कुछ पढ़ा क्या हमने? इसका रिएक्शन नहीं है ना. सो वी आर अनेबल टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. ओके सपोज ये पहले ऐड कर रहा हूं मैं. हम क्या कर रहे हैं, ये पहले ऐड करके देखा, ये पहले ऐड करके देखा, अभी ये पहले ऐड कर रहा हूं. व्हाट विल हैपन? What is this reagent? Tollens reagent. Tollens reagent with ketone. Will there be any reaction? No. No, right? Tollens reagent is an oxidizing reagent for aldehydes only. So aldehyde के साथ कुछ reaction होगा? हाँ. Aldehyde के साथ reaction होगा ना? हाँ. So it will convert the aldehyde into what? RCO man. RCOH. RCOH. Okay, so C double bond O CHO on reaction with Tollens reagent कार्बोक्सिलेट जैसा मिलेगा हमको. कार्बोक्सिलेट because the solution is basic. So CO minus मिलता है. इसको क्या ऐड कर रहा हूं मैं? If I'm adding CH3MgBr वो यहाँ पे ही अटैक होके it will be converting into CH3 and OH. ये वाला पार्ट के ऊपर तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा ना. So next क्या ऐड कर सकते हूँ? CH3OH in the presence of H positive. So इसके ऊपर if you are adding CH3OH in the presence of H positive, सबसे पहले क्या होगा? ये H positive इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, what will be the product? Acid plus alcohol product. Acid plus alcohol, the product is ester. कितने बार देखा हमने? This is acid and if I am adding an alcohol to it, acid plus alcohol gives rise to ester. So ester मिला ना. इस ester के ऊपर if you are adding CH3MgBr, characteristic reactions of carboxylic acid derivative क्या होता है? Substitution ना. So पहले CH3 जाके इसको substitute करेगा, then it will be forming into CH3 C double bond O. ये तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा. नेट में 3 equivalents of CH3MgBr will be used. This has converted into OH CH3. This will be converted into पहले C double bond O CH3.
which on further reaction with CH3 MgBr converts into OH, CH3, C bond CH3, CH3, OH. जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल गया। आया समझ में? हाँ सर। ओके, सो यू नीड टू नो, ये रिएजेंट्स दे दिया हमको, सो एक एक ऐड करने से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकता है वो हमको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एनालाइज, राइट? ओके, ठीक है।